प्रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणम् विहरन्ति ध्यानमङ्गलम् रसि संविदो यारिति स्पृशा भग्नो मना शोभयन्ति श्रीनन्दनन्दिका यशोदा जीवना हे श्री दामोदर हे श्री माधवा. Oh, beloved Master, having seen you as you converse intimately with us in secret places, your smiling face, which act as a stimulus for our amorous desires, your glancing at us with love, and your expansive chest, which is eternal resting place of the goddess of fortune, our hankering to meet with you has increased manifold, and therefore our minds are repeatedly bewildered. As I have explained previously, verse 9 has a particular meaning when recited by the gopis, whose nature is submissive, and the meaning when spoken by those whose mood is contrary. So when spoken in a contrary mood, it recalls that uh, your loving pastimes with us, especially your sweet words, were most delightful. But when in separation from you, we heard someone repeat your words or recount your pastime, it causes us much pain. Our pastime with you are a source of much joy, but remembrance of them in your absence is certainly not. For example, Krishna may tell Srimati Radhika, "Oh Radhika, you are the very life of my life. I cannot live without you." Although these words will Radhika fill Radhika with happiness, when she is reminded of the same word in Krishna's absence, she is overwhelmed with deep sadness. Another example is that Radhika's friends may tell her, "Krishna, leave all the other gopis for you." If Radhika hears these words, then she and Krishna are apart. They evoke memories of their pastimes and cause her unbearable distress. Now, in the 10th verse, the gopis continue with the line of thoughts. They utter four phrases which describe one of Krishna's captivating features. O cherished beloved, when parted from you, remembrance of you smiling, your tender glance, यानी कि प्रेम विक्षणम, your intimate pastimes with us, viharanam chate, है ना? Your loving talks with us in solitary places, rahasi samvida, fills our heart with pain. So each gopi has met with Krishna before and now relieves receiving his sidelong glance full of longing, gazing at the beauty of his smile and being taken in his arm. In her remembrance, she experiences profound separation from him. The gopis remember that when Krishna goes out with each countless friends who to herd the cows, Baldev goes ahead while Krishna follows a little behind him. Playing on his flute and smiling, Krishna glances at them from the corner of his eyes, and in response, they worship him with their eyes. His glance fully express the longing in his heart. Let us meet at Sanket. They read his glances and understand his messages. Vishwanath Chakravarti explained that in the verse, the word samvidha means friendly, joking conversation. Narma samlab. Okay? As we discussed earlier, Narma means friendly joking, and samlab means
conversation, none emerged. And Gopis, remember this example of joking conversation with deep hidden import. With his flute playing, Sri Krishna called them to the forest. But when they appeared here, he told them to return to their homes. This is called Narvasaramlap, playfully joking language that implies a completely different meaning from what is spoken indirectly. Krishna was beseeching the gopis. Do not return to your home. Huh? Do not return to your homes. Just hold on. Huh? Hare Krishna. रजनी एष घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रातियात वर्जम नेहा स्थेयम स्त्रिभिसु मध्यमा. This night is quite frightening and ferocious. Creatures are lurking about. Return to Braj, slender waisted girls. This is not a proper place for women. Krishna seemed to be saying, the night is dark and cloudy, and the dense forest is full of wild animals. You should return to your homes and serve your husbands. But later, when he left Vrindavan and began reciting in Mathura, he clarified the meaning of these words. He sent Uddhava with the message from the gopis, which read, that night after I called you to the forest, you thought I told you to return to your homes. You should know that I did not say that at all. I actually say, do not leave. The moon is full. So the night is not as dark as all dark, at all dark and frightening, but the sky is cloudy and it may rain. So if it does, where will you take shelter? If you stay here with me, you will be safe. So Krishna has uttered the word Rajani Esha Ghora Rupa, which apparently means the night Rajani Esha is dark Ghora. So, however, there is another hidden meaning hidden between the words Esha and Ghora, thus making it Esha Ghora. The night is not dark. घोर मतलब डार्क है ना. तो एश घोरा मीन्स द ना रजनी मीन्स नाइट होता है ना. रजनी एश घोरा. यहाँ पे एश घोरा एश अघोरा. Similarly, Rupa Ghora Sattva Nishevita, the forest in habitant of furious beast. So Rupa Ghora Sattva Nishevita. ठीक है. तो यहाँ पे शत्रु निषेविता. तो एनिमल इन द फॉरेस्ट आर नॉट एट ऑल फिरोशियस. तो ये अलग अलग मीनिंग है. हाँ, तो जैसे एक ऐसे मीनिंग हो गया, एक ऐसे हो गया. वहां पे घोर हो गया, वहां अघोर हो गया. हाँ? तो इन दैट वर्स द वर्ड ना मीन्स नॉट can be applied to either the first part of the line or in the last part of the line, and thus two optional meaning are derived. In this way, pratiyat varjan means go back to Vraja becomes na pratiyat varjam, do not go back to Vraja. So pariyat varjam. तो ना पर्यात वर्जम मीन्स मत जाओ. ना इहे स्त्रियम, do not stay here becomes iha shreyam, and you should stay here. So the gopis on the bank of Yamuna now refer to the conversation with Krishna on the moonlight night. uh, they say within our heart we understood that you actually wanted, that you were too shy to express your real feeling. We also were too shy.
to openly express ours. Okay? So our hearts contain sweet memories of such loving talk and pastime. But now, in separation from you, these memories are the cause of deep sorrow. When someone dies, all of his friends and relatives grieve. A woman in mourning will weep for her lover. He had so much love for me, but now he is not no more. So, in similar way, the gopis become overwhelmed with the pain of separation from Krishna upon remembering his smile, his heart-touching ways, and also his tricky, joking words, full of double meaning that indicates, for example, that they should secretly meet with him in Sanket Kunja. The word Sanket refers to any assigned place of meet for a divine couple, if not necessarily a specific place, although there is also a specific place known as Sanketa, which is situated between Nandagram and Barsana. There are many such Sanket scattered around Braj. ठीक है वो बिल्कुल बीच में पड़ता है वैसे ये विलेज संकेत विलेज वहाँ के डिटीज का नाम है संकेत बिहारी एक बाबा को जानता हूँ मैं जो वहाँ पे उन्होंने भजन किया बहुत ही ज्यादा स्पेशल डिटीज है वो उन्होंने बड़े पास्ट में बताया वहाँ के डिटीज के so now the gopis now say we want to be free from these memories but we cannot we are absorbed in thinking of um, you know we are absorbed in thinking of your beautiful smile parasitam prema vikshanam your tender glance prema vikshanam your intimate pastimes with us Viharanam, and your embrace talk with us huh, in solitary places. Rahasi, some without. In this way, we are always reminded of you. These four beautiful features bring auspiciousness to the heart. Dhyana Mangalam. But they also cause the heart of feeling agitation. Shobhayantihi. O cheater, the mere remembrance of these four features causes great disturbance to our heart. You cheat with this for your smile, you cheat with your loving words, you cheat with your intimate pastimes, you cheat in everything you do. Your entrance in your heart gives us some pleasure initially, but later your presence um, there becomes like poison and kills us. Wow. Srila Jiva Goswami comments on this verse as follow. Krishna ये कह रहे हैं कि gopis, you know that I am difficult to attain. So why are you expressing your desires to enjoy intimately with me? Sometimes you say, please place your hands on our head, my head. Sometimes you say, place your lotus feet on our breast. And other times you say your smile and everything else about you is so enchanting. Why do you speak like this? If you feel affection for me, why do you want to see me face to then just listen to my Harikatha and be satisfied with that. Why do you want to see me face to face? In reply, the Gopi says, you yourself are the reason we cannot be satisfied simply by hearing your pastimes. The fault lies in your previous loving dealings in Pururang. To what are the gopis referring? When Krishna goes cowherding, it is with the sole purpose of meeting with them. In fact, wherever he goes in Braj, it is with the intention to meet with them there. For example, early in the morning, he goes to Yamuna River, saying that he's going to take bath. Shh. But he does not take bath. He simply stand under Kadamba tree on Yamuna bank, waiting for the gopis. You know how stop. He simply stand under the Kadamba tree on Yamuna bank, waiting for the gopis whom he knows
come there daily to fill the pots with water. On pretext such as this, he arranges to go wherever they go. If he knows that they are going to Giriraj Govardhan to perform worship, he will find an excuse to go there. This is the nature of Purvarag, a noxious anticipation to meet with one's beloved. ठीक है और पूर्व राग विलास क्या होता है जब वो मिलते हैं ठीक है जो anxious anticipation to meet with each other होता है ना वो मिल जाना होता है तो gopis also eagerly wants to meet with Krishna. They find endlessly excuse to do so. They tell their superiors they are going to perform worship of Gauri, ठीक है और सूर्य. But sometimes just as they are about to meet Krishna, one of their superior comes along, like Jatila and Chandravali's husband Govardhan Mal, and their plans are foiled. ऐसा होता नहीं है कभी उनके प्लान कभी खराब हो कृष्णा कोई ना कोई रेंज में कर लेते हैं The gopis knows that Krishna's schemes to make them look at him. They know that he plays his flute to attract them. Then smiles, even though he has absolutely no reason to smile by doing so. They now say, "You increase our ardent longing to be with you and love you. And love you. But now you have disappeared. That which you increase now causes so much pain that we are not able to remain alive any longer. Perhaps we will die." The prefix pra is prasitam. Prasitam means the excellent way, and prahasitam means the most exclusive, exquisite, smiling or laughter. At every opportunity, Krishna laughs in a charming way and casts his glances towards the gopis, sometimes from behind a tree, sometimes from within Nikunja. Somehow or other, he contrives to send them the staffs, the shafts of his arrow like glints coming from his loving lotus face, which is adorned with the most graceful and sweet smile. A glance that carries the deep message of one's heart is known as Prema Vikshanam. The Gopi proceed to give an example of the third Krishna's charming feature. तीसरा फीचर कौन सा है कृष्णा का his confidential presence, Viharanam. The way you strolled past us with one hand on the shoulder of your friend and the other hand trailing a lotus can be compared with nothing else. He rests his hand on the shoulder of a friend to indicate to the gopis, I want to be with you and place my hand on your shoulder. Similarly, he twirls a lotus to convey to them, my mind and heart spin with the desire to be with you. If I cannot meet with you, I will die. He sends the gopis signal like this when he is with his cowherd friend, and the gopis perceive them from afar and understand them. In this verse, the word Viharanam, Viharanam means a special kind of theft. संस्कृत में जो वर्ब होता है HR means to steal. र यानी कि हर HR means हर तो इसलिए हरि जो है हर से बना है और हरे कृष्णा जो आता है हमारा so according to this specific definition Viharanam does not refer to stealing money but stealing the heart. So in connection to Viharanam also denotes to walk with friends and to walk with lady. When the gopis utter Viharanam to refer to their attraction for Krishna in Pururag, before their first intimate meeting with him, he cannot mean to walk with the lady. In this instance, Krishna casually walks
along with his friends, and his walking like this is only to show his desire to meet with them. And he ambles along nonchalantly, resting one hand on the shoulder of a friend and twirling a lotus in the other hand. In this way, he intentionally pulls at their heart. Seeing this, they lose awareness of everything else and thus become mad. The scene is far superior to the scene of their meeting, far, far superior. So, Venugit is sung in Pururag, but Gopi is sung in the separation. That is, that takes place after meeting. Still, when in the separation the gopis may think we have never met with Krishna. The first meaning of Viharanam, to walk with friends, refer to Purva. But when the gopi speaks of any pastime that took place after they met with Krishna, such as his walking along with Radhika, Lita, Vishaka, Chitra, and so on, then the second meaning, walking with the lady, applies. So then when Radha and Krishna are strolling along side by side, Krishna rests his hand on his shoulder or shoulder and the shoulder of another gopi. The gopis then espy a creeper and wind along around a tamal tree. They see the blossoms that ladden the creepers and follow flowers that adorn the tree, delight in each other company and laugh gaily. And if there are any manjaris on on that creeper, they merrily join in the laughter. The gopis now remember this incident as well as the conversation that took place at that time. Look how radiant this creeper is. Krishna remark indicates that the creeper's happiness is due to being wound about the tree in the tight embrace. With these words, they instigated the gopis with desire to meet with them like this, upon which they become blissfully intoxicated, their deep mood of love for him further intensifying. But now Krishna is no longer within their sight, and they are recalling their confidential pastime with him, the way he smiled, his loving glance, his amorous pastimes with them, and his intimate conversation with them. The Gopi says again and again, you playfully expressed your heart, eagerness to be with us. Then we remember this. We are filled with hope that we will meet with you very soon. So each of the four, Parahasitam, Prema Vikshanam, Viharanam, Chite, Rahasi Samvida, है ना? So is superior to the preceding one, thus making the fourth the best of all. As mentioned, Parahasitam means smiling or laughing, but along with that smiling, there is also glancing with increasing love and affection. It is called Prema Vikshanam. So the gopis' amorous pastime with him, Viharanam, are still superior as the divine lover gaze into each other's eyes and blissfully smile. They wander throughout the forest, arm in arm, superior still and inclusive of all the other three features. Their secret conversation in which they touch each other's heart by expressing the priceless mood contained there. In this way, there are gradation in the realm of perfection, good, better, and best. The face Rahasya Samvida also has its own specific speciality. Krishna's loving talk with gopis so deeply touch their heart that they become embedded there. As a result, the gopis cannot remove remembrance of those intimate conversation at any time, even if they desperately want to do so. They conclude, we believe that these interactions were based on true love, but now we see that you are nothing but a cheater and a hypocrite.
You never speak to us about the core of your heart. You spoke only to cheat us. If you had any love and affection for us at all, you would appear before us. But you do not. But you do not. तो भगवान की ना लीलाएं हैं। ये बताया जा रहा है कि चार एस्पेक्ट बताए हैं, ठीक है। ये आज का जो क्लास है इसको समराइज कर देता हूँ कि जो आज का जो श्लोक था, वो श्लोक क्या था? प्रहसितम प्रिया। अरे, एक मिनट। प्रहसितम प्रिया प्रेम वीक्षणम विहरम च ते ध्यान मंगलम रहसि संविदो यारिधि स्पृशा कुहक नो मना शोभयंती। तो यहाँ पर चार चीजें जो हैं उसके बारे में बताया गया है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट रही इस पर्टिकुलर श्लोक के अंदर। भगवान के बारे में जो गोपियां बता रही हैं, प्रहसितम, फिर प्रेम वीक्षणम और विहरणम चेते और रहस्य संविदो। तो इन चारों में जो है सबसे प्रहसितम का मतलब हो गया तुम्हारी स्माइल जो है वो बहुत अलग है ना। और प्रेम वीक्षणम का मतलब हो गया when along with your smile there is also glances which with increasing love and affection is called prema vikshanam। ठीक है। और गोपीस का जो पास्ट टाइम है विहरणम, है ना, कि तुम्हारी जो जो तुम्हारे साथ जो विहारने में जो मजा है। तो एज द डिवाइन लवर गेज इनटू ईच अदर आईज blissfully smile, they wandered throughout the forest arm in arm, superior still and inclusive of all the other three features, क्योंकि वह क्या है? रहस्य संविदो। अब एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है जो समझने वाला है कि किसी भी दो मित्रों के बीच का जो प्रेम संबंध है वो किससे ज्ञात होता है कि वो एक दूसरे के प्रति कितने गुह्यम है, या कितने उन दोनों के बीच में आपस में गुह्यम वार्तालाप होती है या गुह्यम कॉन्वर्सेशन होती है। हाँ, जब इनके बीच में इंटीमेट टॉक्स होती हैं, जब इंटीमेट कॉन्वर्सेशन होती है, तब जाके दोस्ती परिपक्व होती है। जैसे कि आप देखोगे, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता था कि मैं किसी शादी में गया हूँ और मेरे स्कूल के अंदर किसी लड़की के साथ दूसरे सेक्शन के लड़कों के साथ कभी ऐसे कभी हमारे सेक्शन की लड़ाई हुई हो, या कुछ कॉन्वर्स कुछ ऐसा कुछ कुछ टेंशन हो या कुछ हो। अगर उनमें से कोई भी एक बंदा शादी में नजर आ जाए और जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे आसपास कोई भी दोस्त नहीं है खाना खाने के लिए तुम्हारे साथ बैठने के लिए, तो तुम उस बंदे के पास जाओगे, हाथ मिलाओगे, उससे बात करोगे एज इफ कभी कुछ हुआ ही नहीं, और वो स्कूल के दोस्त है। और फिर क्या होता रहा? वही अगले दिन बंदा दोस्त बन जाता था, है ना। तो ये तो बहुत ऊपर ऊपर का हो गया। लेकिन जब रहस्य संविदा होता है ना, जब 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 इंटीमेट और सीक्रेट कॉन्वर्सेशन होती है, तब होता है एक व्यक्ति अपना हृदय खोल के किसी दूसरे व्यक्ति को बताता है और दूसरा व्यक्ति अपना हृदय खोल के उसको बताता है।
तो प्रहसितम प्रिया प्रेम वीक्षणम विहरणम, अगर हम देखें तो प्रहसितम जो स्माइलिंग है, वो तो गोपियों को भी देते हैं, वो बूढ़ी बूढ़ी गोपियों को भी देते हैं, और ग्वाल वालों को भी देते हैं, है ना। अगर ये बात रही तो प्रेम और वीक्षणम, और उनका जो लव और अफेक्शन जो ग्लेंसेस है, वो भी उनके हर एक के प्रति है, चाहे वो गोपी हो, चाहे वो ओल्डर गोपियां हो, चाहे वो उनके मित्र हो, है ना। और विहरणम, तो विहार तो भगवान पता नहीं कितनों के साथ करते हैं, खाली गोपियों के साथ नहीं करते, वो उनके साथ साथ जो है वो अ, ग्वाल वालों के साथ भी करते हैं, गाय भी चराने जाते हैं। ठीक है, हालांकि विहरणम का मतलब यहाँ पे यही है कि गोपियों को चेस करना। लेकिन फिर भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे अमेजिंग है, वो है रहस्य संवेदों, कि जो आपके साथ जो इंटीमेट कॉन्वर्सेशन है ना, दे टच अवर हार्ट। और यही जैसे गुड बेटर बेस्ट, द बेस्ट इज रहस्य सम विदो। सो रहस्य सम विदो की जो स्पेशलिटी है वो यही है कि ये इसका मतलब ये है कि कृष्णा जिसके साथ भी रहस्य संविदो, यानी कि जो इंटीमेट पास टाइम कर रहे हैं, वो उनके अपने ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बताया था मैंने पीछे भी, कि जो जब 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 रासलीला हुई थी, तो उसमें सब गोपियां थी, कृपा सिद्ध, साधना सिद्ध, नित्य सिद्ध में भी तटस्था, हाँ, विपक्षा, और स्वपक्ष एंड सुर। और उसके अलावा उसके अंदर जनकपुर की जो गोपियां थी वो भी थी, उसके अंदर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि भी थे जो गोपी गोपी स्वरूप में थे। ठीक है, उसके अंदर देवी देवताओं के डेमी गॉड और गॉडेसेस जो हैं, उनकी लड़कियां भी थी। ठीक है, सब थे। बट देन अगर ये सब थे और रासलीला हो चुकी थी और रासलीला में सब लोग सेटिस्फाई हो गए थे, तो फिर क्यों चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन राधे श्याम जो है वो मिले दोबारा? यानी कि केवल अष्ट सखियां, हाँ, या राधा रानी की सखियां थी, और तटस्थ गोपी और स्वपक्ष गोपियां क्यों मिले? क्योंकि दे हैड एंजॉयड विद एवरीबडी, है ना। पहले तो सबको ये लग रहा था कि कृष्ण सिर्फ मेरे साथ है, तो इस अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने राधा रानी की प्रधानता को स्थापित करने के लिए बता दिया कि देखो सीधा है, ये जो भी मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, ये केवल और केवल मेरी जो प्रियतमा है उसकी डिजायर है, राधा रानी की डिजायर है। और फिर उसके बाद राधा रानी की ही डिजायर को देखते हुए कि अगर सब गोपियों को पता चल गया कि तुम्हारा अफेक्शन मेरे प्रति अलग ही है ना, तो क्या होगा कि वो मुझसे जेलस हो जाएंगी। ठीक है, और उससे उनका विनाश हो जाएगा। एक ये भी रीजन है। तो भगवान ने ये डिजायर को छोड़ के कि राधा रानी की प्रधानता को स्थापित करने के लिए उन्होंने दिखाया कि जिस तरीके का संभोग जो है, मेरे को राधा रानी से करके प्राप्त होता है, जो सुख मुझे संभोग सुख प्राप्त होता है, या विलास सुख प्राप्त होता है राधा रानी से संबंध स्थापित करके, वही विलास जो जो सुख है, वो उसके अलावा जो सेपरेशन है या फिर जो विरह है, वो भी इसी राधा रानी में आप लोगों के कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा है। और इस प्रधानता को स्थापित कर दिया। तब भी जब गोपी गीत हो गए, फिर गोपियों का डांस भी हो गया, और वो एटर्निटी तक चलता रहा। और उसमें गोपेश्वर गोपी, नारदी गोपी, अर्जुनिया गोपी भी आए, सब कुछ हुआ, चलो सब कुछ हो गया। लेकिन तब भी जो 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 पक्ष गोपियां थी, यानी राधा रानी, वॉज नॉट हैप्पी, क्योंकि रहस्य संविदो वॉज नॉट देयर। और दैट हैपेंड एट चैत्र पूर्णिमा पे, गोवर्धन के अंदर। क्यों गोवर्धन इज कंसिडर्ड द मोस्ट सुपीरियर प्लेस इन द होल वृंदावन? बिकॉज वही एक जगह है जहाँ पर सारी के सारी जो गोपियां हैं वो एक साथ इकट्ठी हुई हैं। और उन्होंने फिर बाद में बोला राधा रानी ने कि रास तो हम करेंगे आज रात को भी, लेकिन तुम्हारे पर तुम बहुत पापी हो चुके हो, तुमने गाय को मारा, यानी अस्तासुर को मारा था, वो जो राक्षस था जो गाय का बछड़ा बनकर आया था, और तुमने अपनी माँ स्वरूपी पुतना का भी तुम सारे प्राण पी गए, तो तुमको तो अशुद्ध हो गए तुम। तब फिर भगवान ने क्या किया, अपनी बांसुरी से कृष्ण कुंड की स्थापना करी। फिर गोपियों ने अपने कंगन से राधा कुंड को खोदा, लेकिन जब वो पानी लेकर आ रही थी
मानसी गंगा से गोपियां सारी, तो उनको समय लग रहा था। वहां ने सारी नदियों का आह्वान करके राधा कुंड में बुलाया। तो पहले वो श्याम कुंड में स्नान किया उन्होंने, कृष्ण ने। तो उन्होंने बोला तू शुद्ध तो हो गया, लेकिन तेरा पानी शुद्ध हो गया। उन्होंने बोला तू तो शुद्ध हो गया राधा श्याम कुंड में स्नान करके, लेकिन हम तो राधा कुंड, राधा ने बोला मैं तो अपना कुंड बनाऊंगी, तो अपने कुंड में स्नान करूंगी। तब क्या हुआ, श्याम कृष्ण भगवान ने दोबारा जाके राधा कुंड की शरण ली, राधा कुंड में स्नान करके, तब वो पूरे तरीके से पवित्र हो गए। और फिर राधा रानी ने कृष्ण की प्रसन्नता के लिए पहले राधा कुंड में स्नान किया, फिर श्याम कुंड में स्नान किया। लेकिन श्याम कुंड के अंदर तो सारे के सारे पापों, सारे के सारे पाप कर्म करने के तो पाप धुले हुए थे, उसकी वजह से उनकी अकॉर्डिंग टू हर क्या था, पानी शुद्ध नहीं था। तो फिर जाके उन्होंने राधा कुंड में दोबारा स्नान किया। ये केवल हास्य और परिहास्य है। जितना कृष्ण का जो कृष्ण कुंड शुद्ध है, उतना ही राधा रानी का राधा कुंड शुद्ध है। लेकिन ये केवल हास्य और परिहास्य के अंदर हम लोग व्यवहार के चलते वैसी बात करते हैं। ठीक है, जस्ट टू लाइक जैसे होता है ना, राधा रानी की प्रधानता को स्थापित करने के लिए, कि राधा कुंड जो है उसके जल इतना पवित्र है कि राधा कुंड में स्नान करना चाहिए पहले हमें, और फिर हमको जाके श्याम कुंड में स्नान करना चाहिए। और शाम कुंड के अंदर जो स्नान करके हमारे जो थोड़े बड़े पाप वाप जो चिपक गए हैं हमारे ऊपर, वापस आके दोबारा धो के राधा कुंड में स्नान करके हमें प्रेम की प्राप्ति करनी पड़ेगी। तो ये जो बताया है इन्होंने कि जो गुह्यमता है वो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रहस्य संविदो ही एक तरीका है जिसके द्वारा भगवान कृष्ण के पास जाया जा सकता है। कृष्ण बोल भी रहे हैं, यार तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका क्या है तुम्हारे लिए, कि तुमको मेरी कथा सुननी चाहिए। कह रही कथा सुन के भी मेरी काम हो रहा ना, कथा सुन के भी काम नहीं हो रहा, लेकिन जो तुम कंधे में बैठ के अपने दोस्त के, एक दोस्त के कंधे पे हाथ रख के और एक हाथ में अपने कमर को घुमाते हुए हमसे बात करते हो, ये जो बात करने का तुम्हारा तरीका है ना, ये जो है, ये एक ऐसा ऐसा तरीका है कि लाइक इसको देखकर हम लोग वी आर जस्ट इंटॉक्सिकेटेड इन लव ऑफ योर्स। ठीक है, तो आज का जो था वर्ष बहुत ही सुंदर था। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी कमेंट्री? तो मदर कलावती। प्रभु जी, वो एक आप बीच में एक्सप्लेन कर रहे थे ना, प्रहसी संविदम, हाँ, वैसे समझ लो, हाँ। उसमें आप ये बोल रहे थे ना कि भाई उन्होंने बोला कि तुम अपने वापस चले जाओ अपने घर में, अपने पतियों के पास, है ना। हाँ हाँ और फिर वो जब वो ब्रज छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने दूसरा एक्सप्लेनेशन दिया था, तो एक बारी वो दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या बोल रहा कि उन्होंने इस तरीके से बोला भगवान ने कि मैंने एक मैंने जब उन्होंने उद्धव को भेजा, कि क्या था ना कि भगवान को ना जब रह रह के सारी बातें याद आ रही थी, है ना। और वो सारी बातें याद आ रही थी, उनको सारी की सारी करी हुई गलतियां भी याद आ रही थी। ठीक है, तो आ, उन्होंने, भगवान ने जैसे बोला था कि गोपी ने एग्जाम्पल दिया कन्वर्सेशन में, हाँ, कि द गोपीज रिमेंबर दिस एग्जाम्पल ऑफ जोकिंग कन्वर्सेशन विद हिम। ठीक है, डीप हिडन मीनिंग निकाला उसमें। कृष्णा ने उनको बुला लिया पहले फॉरेस्ट में। ठीक है, और फिर क्या बोला, उन्होंने बोला कि रजनी एश घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात वर्जम वर्जम नेहा स्तेयम स्त्रीभी सु सुमध्यमा। यानी कि दिस नाइट इज क्वाइट फ्राइटनिंग एंड ferocious creatures are lurking about। वापस चले जाओ ब्रज में। ठीक है, इट इज नॉट अ प्रॉपर प्लेस फॉर अ वुमेन। ठीक है, तो कृष्णा सीम टू बी सेइंग दिस, है ना, कि नाइट बहुत डार्क है, बहुत खतरनाक एनिमल है। लेकिन जब उन्होंने भेजा तो उन्होंने बोला कि उद्धव जाके उनको ना इस शब्द इसका ना मतलब समझाना, कि मैंने ये बोला था कि दैट नाइट आफ्टर आई कॉल्ड यू टू द फॉरेस्ट, हाँ, यू थॉट कि आई टोल्ड यू टू रिटर्न होम, बट ऐसा नहीं था। मैंने बोला रजनी एश अघोर रूपा, जो आज की रात है ना, वो अघोर रूप है, यानी ये बिल्कुल भी डरावनी नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी डरावनी नहीं है।
और अघोर सत्व निषेविता। ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि दैट नाइट आफ्टर आई कॉल्ड यू टू द फॉरेस्ट, यू थॉट कि मैंने वापस जाने के बोला, मैंने बोला डू नॉट लीव, द मून इज फुल, सो द नाइट इज नॉट एट ऑल डार्क एंड फ्राइटनिंग। यानी कि जब उन्होंने बोला कि अघोर सत्व निषेविता, ठीक है, फिर क्या बोला, प्रतियात वर्जम नेहा स्थेयम स्त्रिवीसु मध्यमा। यानी कि बट द स्काई इज क्लाउडी एंड इट मे रेन, एंड इफ इट डज देयर विल यू टेक, where will you take the shelter? If you stay here with me, you will be safe. तो क्या किया उन्होंने, सब कुछ चेंज कर दिया। रजनी एश घोरा, ठीक है, उसको क्या कर दिया उन्होंने, अघोरा। एश रजनी एश अघोरा, रूप घोर सत्व निषेविता, यानी द फॉरेस्ट इज इनहैबिटेटेड बाय ferocious beast, बिकम क्या रूप, रूप जैसे रूपा हो गया ना, तो रूपा घोरा, जैसे ऐसा होता है ना माता जी, अध्यापक, नहीं जैसे कि होता है समान, समान अंतर है, तो क्या बोलते हैं, समान अंतर बोलते हैं ना। तो उसी तरीके से रूप घोर सत्व को उन्होंने रूपा अघोर सत्व बोल दिया। The animal in the forest are also not very ferocious. So in that verse, the word na meaning not. ठीक है ना। तो भगवान ने इतने ट्रिकी तरीके से बोला कि, और उन्होंने बोला ना प्रतियात वर्जम, सो डू नॉट, मतलब प्रतियात वर्जन के आगे उन्होंने ना लगा दिया, और ना यह सेयम, ठीक है, कि तुम कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे रहो। तो जैसे ये है प्रतियात वर्जम, तो निवेशिता प्रतियात, ना प्रतियात वर्जन, और नेहा दास्थेयम। अब तुम जाओ मत, यहीं पे रहो, तुम जाओगे तो वहां पे खतरा हो सकता है, लेकिन मेरे साथ किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं है। एक्चुअली मैं एक और बताता हूँ मैं आपको, कि एक तरीके से ऐसे होता है कि सपोज हमारा किसी के साथ संबंध है, और हमारी उस व्यक्ति से लड़ाई हो जाए, या हमारा उससे सेपरेशन हो जाए। और जब सेपरेशन हो गया, तो हम लोग क्या सोच रहे हैं, उस पर्टिकुलर मोमेंट के बारे में सोच रहे हैं कि यार लास्ट टाइम वो मेरे घर पे आया था या आई थी, और मैंने उसे बोला कि तू यार पानी वानी मत पी, सीधा खाना खा ले। तो मैं ये नहीं कहना चाहता था कि पानी मत पी और तू खाना खा ले, क्योंकि मैं ये कहना चाहता था कि लाइक तू खाना खा ले, मुझे भूख लग रही है। नहीं नहीं नहीं, मैं पानी नहीं पीने के लिए इसलिए कह रहा था उसको, क्योंकि ठंडी का समय था, और मुझे लगा कि पानी पी लेगी तो पेट भर जाएगा, या पानी पी लेगा तो पेट भर जाएगा, है ना। तो मैं ये बोलना चाहता था कि अगर तू पानी पिएगा तो तेरा पेट भर जाएगा, तो खाना ढंग से नहीं खा पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला तू एक काम कर, तू रोटी, ज्यादा रोटी और सब्जी खा रहा है, सब खा रहा है, चावल मत खाइयो ज्यादा। चावल इसका नहीं था कि चावल कम थे, चावल ज्यादा इसलिए मत खाइयो क्योंकि चावल जो है रात को सूट नहीं करेंगे। तो ये लाइक अब क्या हो रहा है कि आपने बातें करी उस समय, पानी मत पीना, पहले खाना खाओ, ज्यादा चावल नहीं खाने हैं, रोटी ज्यादा खाओ। अब ये बात सोच के व्यक्ति बोल रहा है यार ये खाना नहीं खाने दे रहा ढंग से मुझे, एक भाव आया उसके मन में। लेकिन उसके 6 महीने के बाद जब आपका उस व्यक्ति के प्रति से प्रति प्रेम बढ़ चुका है, और सेपरेशन है, तो उस सेपरेशन को नलीफाई करने के लिए आप क्या कर रहे हो, तथ्य दे रहे हो। अरे यार मैं ये कहना चाहता था, मेरे कहने का मतलब ये था, मेरे कहने का मतलब वो था, तो यहाँ पे ये इंटरप्रिटेशन चल रहा है भगवान का। ठीक है। तो इस तरीके से भगवान उसको करेक्ट कर रहे हैं कि मैं ये नहीं चाहता था कि यार तुम मत जाओ, बोले तुम घर चली जाओ, मैं ये नहीं कहना चाहता था। मैं ये कह रहा था कि तुम जो है ये रुक जाओ, क्योंकि ना तो रात इतनी अघोरी है क्योंकि चंद्रमा है, ठीक है, और ना ही इतने कोई जानवर यहाँ पर है, कुछ है, डरने की बात है नहीं। ठीक है। हाँ, ये बारिश हो सकती है, तो तुम अगर इधर उधर जाओगे तो तुम फंस। अंडरस्टूड। अच्छा, मधु मंगल, यू वांट टू से समथिंग? नहीं प्रभु जी, श्री राधे।
Shreya, you want to say something? Soumya, Yes, Prabhuji. do you want to say something? नहीं प्रभु, all good. समझ में आया? हाँ हाँ समझ में आया और अ, हाँ मतलब सुना है, बहुत ही इंट्रिकेट टॉपिक एक्चुअली है, so I just heard it silently. Vinod, you're always late as usual, huh? यस प्रभु जी, आज क्या मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ। मैं बचपन की आदत है। Whatever conversation we had, we pray to Radhashyam, Gurdev, Krishna, Srila Prabhupada, Srila Gurudev, Ananta Koti Vaishnava to give us a blessing so we can always remain situated in Swarup as a servant of Krishna and attain the goal of and serve the divine couple with our mind, body, and words and attain the goal of life, that is Radha Dasyam. Vancha Kalpatru Vaishya Kripa Sindhu Evicha Patitanam Pavanebhyo Vaishya